celebration time. For relief from musculoskeletal pain, Madhumalti ma'am says, okay. So we have some pains and aches and we've tried techniques which have not worked. Yes or no? बहुत सारी चीजें हमने ट्राई की है बट कोई काम में नहीं आया. Everything was a temporary relief. Yes or no? So how many of us are looking for some permanent relief? Some long-lasting relief? Something that works on the root of the problem? Yes or no? क्या जड़ से मिटाना चाहते हैं आपके musculoskeletal problems? Okay, people are eagerly saying yes, but are we ready to work on it? Are we ready to take charge of our neuromuscular health? क्या journey difficult होने वाला है या journey आसान होगा? Is the journey going to be difficult to take care of yourself without any external intervention? Okay, very confident. A couple of people say yes and a couple of people say don't know. तो journey ना easy होने वाला है ना difficult होने वाला है. अगर आप करना चाहते हैं तो दुनिया में कोई चीज difficult नहीं है. It's just that you have to bring yourself in spite of the pain to work upon yourselves. So the journey is going to be very simple and easy. Now, can I have 2 minutes of your screen time so that I can share with you what exactly are we going to do in the journey of Ashtaang Chikitsa? Do I have 2 minutes of your screen time? Do I have your permission? Participants? Sujaya ma'am, Subhash sir, Meenakshi ma'am, Sunil sir. Please write in the chat box so that, okay. So just give me 2 minutes and I will share the screen with you. Okay, Namaskar. I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. Hello. Yes, Anilji, can you please keep everybody on mute, please? Yeah. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems. जैसा कि किसी ने participants ने बोला, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं musculoskeletal problems के लिए. तो इसमें न्यूरो भी शामिल है और musculoskeletal problems भी शामिल है. That you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs and functioning at optimum levels. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and a human exponents expert. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. जिसका हम सभी लोग जानते हैं, आज तक भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है जिससे आप इन डिजीजों से बाहर निकल सकते. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way
That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. अब हम आते हैं, who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? क्या सभी के लिए है ये webinar? बिल्कुल नहीं. उन लोगों के लिए है जो अपने टेम्पररी ट्रीटमेंट से थक चुके हैं और नेचुरल और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हो. People who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing Neuro Musculoskeletal Problems with Ashtaang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the 8 sharir or softwares in our body in detail. I will just give you a brief on what are these 8 sharir. Shrishti sharir, Garbha sharir, Dosha sharir, Marma sharir, Pramana sharir, Sankhya sharir, Prakriti and the Vikriti sharir. अभी लास्ट तो शरीर जो है प्रकृति and the Vikriti sharir, this is of prime importance as well as neuromuscular health is concerned. So Prakriti is the regeneration factor in our body and the Vikriti is the degeneration factor. तो होता क्या है, especially for women post menopause, जब आपका estrogen level down होता है, तो degeneration starts at a faster pace and the regeneration is slow. So the pain surfaces, inflammation surfaces, which you feel, जबकि वो है तो बहुत सालों से. But the body has been taking care, but on aging process, the imbalances start happening between the degeneration and the regeneration factors. So that is what we balance in Ashtaang Chikitsa. So Ashtaang Chikitsa heals, of course, the list goes on and on, but these are a couple of diseases which are commonly seen among participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issues. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. Thank you for listening to me patiently. आप सब लोगों को I will just share the how we proceed in the webinar. इसके बाद आप स्वामी जी का वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें आपको और डीप में पता चलेगा अष्टांग चिकित्सा में हम क्या करते हैं. Of course, after that, we will have somebody live who would be sharing his journey in Ashtaang Chikitsa and how he or she has benefited from it. After that, we will be sharing the program details. And last but not the least, Swamiji himself will be coming live to answer all your questions in the limited time. We have limited time with Swamiji, so we'll try to answer as many questions as possible. So kindly write your name, number, and the problems that you're going through in the chat box. Thank you so much. Over to Anilji to share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal Problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal Problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं?
उसके बारे में नी पेन से स्टार्ट करते हैं, राइट? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो, people are getting into still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes, what does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है। Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है। Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा.
This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation?
If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, you hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स, आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस. सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders?
आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal Problem. अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as caudy. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. Nabhi, caudy, nale. Now if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath, yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. यू लूज एक्सेस ऑफ वेट, जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. सो संख्या शरीर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर. नाउ अगेन इफ यू हैव टू अलाइन और संख्या, इफ यू हैव टू करेक्ट द संख्या, you have to use kumbhak. Now let's go to the third part, pramana. Now one more thing in samkhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment, एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira.
प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण। चौथे पे आ गए हम, प्रमाण। प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी। इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं। लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है। योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें। और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स। जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है। पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन, वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है। So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु। 7 different density tissue की है आपके शरीर में। There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, these are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं। If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड। सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन। हमारी ऑर्गन वीक हो रही है। व्हाट इज डायबिटीज? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So, how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को। देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन। दवाई हो ही नहीं सकती है। सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक। 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है। एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन। एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला। सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें। नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस। अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से। मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा, again do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना। यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। यू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू, व्हेन यू लिफ्ट वेट विद द राइट हैंड, सपोज कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, द ट्रिगर गोज टू द राइट हैंड मसल्स। दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना। This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen?
अब सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं। क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल ट्रिगर। अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा? ये डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली। योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर, यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा। वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? Aapka heart, aapke muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. देयर आर जंक्शंस, मसल एंड नर्व जंक्शन, मसल एंड बोन जंक्शन, टू बोन्स एंड देयर इज अ जंक्शन. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली मेक them मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. इफ योर मर्मस आर नॉट फंक्शनिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन. ऐसे मान के चलिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर टिश्यूज एंड सेल्स. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells.
इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यास and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of वात दोष, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that.
There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-year-old, 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from Myasthenia Gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now now been busted. So now you can change your genetics also. Now, if the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure.
whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti
Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Keki Darbari ma'am to share her journey of Ashtaang Chikitsa. Keki Darbari ma'am, are you able to hear me? Yes, I am able to hear you. So if you could Can let you us hear know me? what was your situation before you joined Ashtaang, what were your apprehensions regarding the Yeah. course, and whatever was in your mind, the doubts of whether I'll be all right with Ashtaang Chikitsa or not. If you could just Right. let us know, it would be great. Thank you so much, ma'am. Yeah. First of all, Rachna, I have a request. My name is Aban Dalbari. Because the Zoom is on Keki Dalbari, I find it difficult to change it to Aban Dalbari every time. I am so So, sorry, ma'am. Thank you. My apologies. Because even to you. in class 1, somebody called me Keki ma'am. That's a Okay. male name amongst Okay, us. okay. I'm Just so sorry. 76 and I've done MBBS. And I have my husband had COVID in January. I had COVID in July, and he took a long time up to June to recover and to get a little stamina. So when I got COVID, I was thinking that my strength and stamina has decreased very much, and I wanted to be young again. So that's why I was, and this came through another group. I heard about a lady who couldn't bend her knee being able to do Surya Namaskara number 12 times. And when I heard Swamiji's webinar, I said, I'll be foolish if I don't join this. But I tried to uh, encourage my husband to join it. He did not take it up seriously because we are having a lot of things to do. And I said, I'll be foolish if I let it go from my hand. Now I have seen just from the 5th of September to today's 29, 15 days, I have had wonderful changes. My
thumb base used to get swollen and pain during winters or sometimes. That swelling disappeared, and I was wondering one day, how did that go? And then I thought of what I was doing. The other thing was that I had a tightness on my feet, the whole leg, right leg. By evening, it would become a little swollen and it would be like a clamp. That sort of went, and I was able to walk lightly. So I started feeling lighter. My problem was that I was walking bent from the hip. So many times my children corrected me. I have a spinal problem in early childhood, and that has given a bend to my back a little. But this was too much. And she would come and make me straight, but I could hold that straight position for a while. And then again, I would feel comfortable bending down and walking. Otherwise, I couldn't take steps ahead. Now I'm able to walk straight. Then there is also uh, so many changes have occurred. The second week, I started passing a lot of plates. A third week, I started getting surprised by changes happening in my health. The If I've left out anything, the energy and strength and enthusiasm has come into it. First, you may find it seemed impossible that we will do all these things, but once you keep at it, the thing becomes easy. So I wish everyone all the best. That's all. Thank you so much, ma'am, for your time. It is really impressive to hear. At Thank 76, you. you tried to change your life, and the I willpower feel blessed. Pardon me? I feel blessed. Thank you. Yes. Thank you so much. Now Thank you. I would like to invite Gangadhar sir to talk about his journey of Ashtaang Chikitsa. Gangadhar sir, are you able to hear me? Yes, madam. Yes, madam. Just a sec, sir. I'll just put you on spotlight. Yeah. My name is Gangadhar. I joined last month. After joining the program, before joining program, I have some back pain issues and all, leg pain and all. After that, joining all are reduced. After doing the kriyas daily, fully reduced. I'm happy about the program. After doing the kriya, I'm getting good energy, and I'm happy about the program. And whatever I paid the money, it's a worth of the money, and whatever more than got it in that I got it. Thank you so much, Gangadhar sir, for giving your time and joining us in the webinar. Now I would like to request Anilji to please share the program details with the participants. They are eagerly waiting to know the program details. Yeah. Namaskar, everyone. Just let me share my screen. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. Okay. So, a lot of you may be waiting for this this part of the presentation, wherein we'll be telling you about the details of Ashtaang Chikitsa, the dates, the fees, and everything. So we'll go through this very fast.
because Swamiji will be coming live after this. All right. This is a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक guided program है जो expert mentors की supervision के अंडर किया जाता है और सभी जो mentors हैं वो स्वामी जी द्वारा trained होते हैं. So the classes will be conducted by our कुंभक mentors और अष्टांग चिकित्सा mentors. जैसा कि स्वामी जी वीडियो में बता चुके हैं, there are 3 modules in the whole program. Module 1, Module 2 and Module 3. Module 1 is for Vata balancing, Module 2 is for Pitta, and for Kapha, it's Module 3. Duration of all 3 modules is 21 days each. So total duration of 63 days or 9 weeks. Program overview again, 9 plus 1. Why 1 week extra has been added? We'll get to know in a short while. So total जो engagement रहेगा आपके साथ वो 9 plus 1 यानी 10 हफ्ते का रहेगा. Total engagement would be of 10 weeks. There will be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning class or the main class and 1 will be the mentoring class or the practice class. This is how the program will or the classes will proceed. What are the next steps? You pay the program fee and we have a special webinar pricing for people who stay back. And then you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And then you start attending your classes, starting with module 1 or the Vata module. Again, total classes in each module is 6, out of which 3 are learning class or the main class and 3 are mentoring or the practice class. So 6, 6 and 6, total 18 classes for all 3 modules. And if you see one extra customization class, that I'll let you know what is customization class and why this is something extra. Class start date for the 100th batch. This would be the 100th batch that will be starting from 3rd October 2022, Monday at 6:30 p.m. We'll share all these details, the class timing, everything, the dates and everything in WhatsApp group as well as in chat here. Mentor classes. In module 1, mentor classes will be on Thursdays. Module 2, mentor classes will be on Fridays, and mentor classes or the practice classes will be on Saturdays for module 3. Class experience. What is the class experience like? As I've already told you, these will be live sessions. ये live sessions रहेंगे Zoom app के ऊपर. Mentors सभी को observe करते हैं. Mentors watch all the participants. Many people ask us that how will you know that whether we are doing correctly or not? So for that, in the practice class especially, you to keep your cameras on so that mentors can watch you and give you the feedback as if you're doing the kriyas correctly or not. So that's how the classes are conducted. There'll be written instructions also, which you can download and take a printout and refer those while doing your daily kriyas. Some people like to watch and do the kriyas. Some people like to read and do. So whichever is your style of learning, you can do that. Then there'll be session recordings. All the classes are recorded and made available to all the participants. There'll be a lot of extra things that will be provided to you. There'll be mental practices. There'll be a unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan because there's no diet plan. There's a video that you'll be getting from Swamiji as to how to use food, how to cook your food in a way that it does not harm your body. So there's no diet plan. Many people ask us if there are any diet restrictions. There are no diet restrictions. Only the perspective would be given according to the season, what you have to eat and why to eat that. Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared with all of you. Yearly expenses. Now, before I announce the fee, I'd like to just take your attention to the kind of money that we could already be spending just to maintain the problem that we have. I've written doctor fee as 6,000 to 12,000. These are yearly figures
And why I'm talking about these figures is because when I announce the program fee, we are in the habit of comparing things, right? That's human. So what you're getting, and like one of the participants, just Gangadhar sir, like just see this, just said that he got is more than what is paid for. So that's why we need to compare what we are already spending and what we could be spending in something which is natural and permanent. So if you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending on a yearly basis, and medicines another 15,000 to 30,000. And if you total all of these, 33,000 to 72,000, many people could be already spending just to maintain and manage the disease, not cure it. That's the difference. And if you're into allopathy, we all know about the side effects, so we will not talk about that so much. Okay, so just to give you a perspective as to the comparison that we all make. Now, before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. ये सभी के लिए program नहीं है. So we'll talk about who this program is not for, so that it becomes clear who this program is actually for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. Although many people get results in just one class, but that doesn't happen normally. Okay, so we are used to popping a pill or taking a allopathic medicine, especially if we are into some kind of a pain, cough, cold, anything. जैसे ही हमें खांसी जुकाम छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास उसके लिए एक दवाई होती है. एकदम से अब दवाई खा लेते हैं और उसमें हमें कोई टाइम नहीं लगता है. But when we start working on the body, उसमें टाइम लगेगा. So this is not a magical pill, but this is something which can create magic for you if you don't devote time to your body and to this therapy. This is not for those who are not ready to work on their body. Same thing, same like the last point. If you're not ready to work on the body, because many people I talk to, they say that we don't have this much of time, we don't have 90 minutes, 60 minutes every day to do the. If that's your case, then this won't be of any help to you. And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes, maybe sometimes initially 90 minutes also, because when we start doing something new, obviously we'll take more time. But as you keep on practicing, that time will reduce. So it may reduce to 30 to 40 minutes also. But for that, you have to do it consistently on a daily basis. So you need to have this kind of a time, apart from the money that you'll be spending in the program, for yourself, to work on your body to make it stronger. Like so many things Swamiji already told in the video, why you need to strengthen the body. And this is the only method. Kumbhak is the only method to strengthen your internal organs. So you need to invest this kind of money, this kind of time to get out of your ailments. And this is not for those who are impatient. We know when we are sick, impatience builds up. जब हम बीमार होते हैं तो पेशेंस ज्यादा नहीं होता है, पेन होता है, बट वो होते हुए भी again, since this is not a magic pill, you'll have to keep patience. Time थोड़ा लग सकता है आपको. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. 70 to 80% of the people who join these webinars, they join the webinar just to pick up some tips that many people are also asking in the chat also. Tell us exercise about back pain, tell us exercise about this thing, tell us exercise about this thing. See, like Swamiji told in the video very clearly, no problem is a local problem. If you're experiencing back pain, what is the root? उसकी जड़ क्या है? पेन क्यों हो रहा है? अगर नी पेन है, स्वामी जी ने बताया यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, लिवर तो ठीक काम नहीं कर रहा, तो जब तक जड़ ठीक नहीं करेंगे तो उस पे सोल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो टिप्स या एक्सरसाइज या थोड़ा कुछ आपको बता दिया जाए कि एक्सरसाइज ऐसे होती है बैक पेन के लिए, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. सो टिप्स पे ये काम नहीं होता है, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेना होता है ताकि आप जीरो से स्टार्ट करें. दिस हैज टू बी डन अंडर गाइडेंस, हैंड होल्डिंग होती है, एवरी डे ट्रैकिंग होती है. जो आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें ट्रैकिंग होती है हमारे डेली बेसिस पर. So this is not something कि आपको एक वीडियो देख लिया और आपने उसको कर लिया, बिकॉज इसमें एक डायग्नोसिस भी है जो अभी हम आगे देखेंगे.
And this is not a free treatment because we are not sponsored by Government of India or any big company. We have a team of 11 people and we have to pay the salaries and a lot of expenses to run the whole program. So this cannot be free. So please don't ask if we can get it for free. That's not possible. Now, what all you get in the program? First point, Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This is the diagnosis to find the root cause of the disease. And this alone in itself, जब मैं announce करूंगा, when I'll be announcing the program fee, that could be just, this Pran Shakti diagnosis could be worth that much only. And this is just the first point. So you get a lot of things, how we run the program, how we conduct the program. So this is the first thing, that a root cause is determined. डिजीज की, बीमारी की जड़ पता करते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस से. अगर जड़ पता नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही करते रह जाएंगे, जैसे कि ज्यादातर और ट्रीटमेंट्स में होता है. वीकली 1 मेन क्लास ऑफ 60 to 90 minutes, वीकली 1 प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 minutes. क्यों है? 60 is the actual duration, then we take up question. So 20-30 minutes questions में लग जाते हैं, answers में, right? So that's how it's written, 60 to 90 minutes. ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months. सभी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाती है एक कोर्स डैशबोर्ड के थ्रू. ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड मेड अवेलेबल टू यू थ्रू अ कोर्स डैशबोर्ड व्हिच विल रिक्वायर अ पासवर्ड एंड अ यूजर नेम. That will be provided to you, and this access of all the recordings will remain with you for 6 months after the program is over. Okay, so that is enough time to learn all kriyas by heart. ये आराम से 6 महीने का टाइम आप आसानी से सभी क्रियाएं को याद कर सकते हैं. वैसे तो 1-2 महीने ही लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर भी एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाता है एक्सेस के. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? In the class recording, the whole class is recorded. Question, answer, whatever happened in the class, that is being recorded. But here, videos of all kriyas, just the separate kriyas. Let's say there's a kriya which is taking 2 minutes. Some kriya is taking 10 minutes. So these are separate videos of those kriyas, not the class recording. So if you want to just watch how to do the kriya, you can do that by spending 2 minutes, 10 minutes. You don't have to watch a 90 minutes class recording. Okay. So whatever you want. If you want to watch the recording, that's fine with us. If you want to just watch the video of the kriya, that's also okay. Written instructions you'll be getting in Hindi and English. I already told you, you can download these and take a printout and use it to do your daily kriyas. Private WhatsApp group to ask doubts and questions 6 days a week. Sundays our mentors are on a weekly off. So 6 days of the week you can ask from 10 a.m. till 8 p.m. in the night. And what all you will be asking, like I already told you, 2 days of the week you'll be live with us. The remaining 5 days when you're practicing alone, and if any doubt or question comes into your mind, this is the place where you have to ask your question. Our mentors are added in these groups. They'll be answering you and guiding you step by step. So this is our support system through this private WhatsApp group. Individual participant progress tracking and feedback. Every day you'll be filling up a form, a short form about your condition on that particular day. So we track it on a daily basis, because if we track it, if we get the feedback from you, then only you and us will know that if the progress is happening or not. Therapy customization for each participant in the 10th week. Now, many of you may be thinking that if different people have different problems, why it's a common program for 9 weeks? It's a valid question. It's a normal question. See, the body needs to be prepared to receive the customization. What is customization? If you remember the first point that I told you about the Pran Shakti diagnosis, the diagnosis is done in the first week, but it is used in the 10th week. Why? Because the body is prepared to receive this customization. 3 primary things, 3 main things happen in these 9 weeks. The first thing that happens is the Vata, Pitta and Kapha of your body is balanced. Second thing that happens is you are told, you're trained into controlled exhalation. And this is the reason, because this therapy is based on controlled exhalation. So people who are doing Kapalbhati on a daily basis, they are advised not to do it for the next 5 to 6 months, because in
Kapalbhati, that is forced exhalation. And what we are teaching here is controlled exhalation. And the third main thing that happens is in these 9 weeks is alignment of 3 basic alignments, like Swamiji told in the video. There are 3 basic alignments of the body: thighs, navel, and the chest. So these 3 things need to be aligned. And when we do these, the Vata, Pitta, and Kapha balancing, the controlled exhalation, and the alignment of these structural alignments of thigh, navel, and the chest. In the 10th week, now the body is ready to receive the customization. In the 10th week, your therapy will be customized and fine-tuned as per your disease and as per the diagnosis. That's why an extra class will be provided for that. Then extended support for 30 days after the program is over. Even when the program is over after 10 weeks, you still get 30 days to ask questions, doubts. And if you keep on, if you're doing the kriyas regularly, daily basis, you'll be clearing your doubts daily basis, right? So you won't need the support. But sometimes what happens is many participants, they fall ill, and then due to which they miss a lot of classes. So that's why an extra 30 days of support is provided from us, and this is free of cost or included in the program fee only. So no need to pay extra for this. All right. Now, program fee for Ashtaang Chikitsa. What most of you may be waiting for, कि देखते हैं program fee क्या होगी, कितना है, क्या हम afford कर पाएंगे, will be able to pay it. That's 14,500 for all the modules. 3 modules, 18 classes, 1 customization class, diagnosis, the support in the WhatsApp, everything included. But like I promised in the start of my presentation, then there's a special webinar pricing for people who have stayed back. And what is that? Just 6,500 for the complete program. Everything, all points I've already mentioned, talked about in detail. So this has been made so affordable that everyone can afford it and enroll into the program and start getting benefited from the natural therapy for permanent solution or long-term solution. Payment methods we'll be sharing in the chat as well as in WhatsApp group. Now, I'd just like to talk about the super team that we have at your service, because howsoever good this program may be, but if there's no proper team to take care of the participants, the benefits cannot be so much. So we have a proper team in place. Rachna Shrival Bothra, she's the program director and the host of this program, this webinar. Then we have Shalini Bhagwat, she's the class manager, shuffling classes, arranging classes. She takes care of all that, all those matters. And then we have Pooja Chopra, she's the Ashtaang mentor. Ranjana Swain, another Ashtaang mentor. Sukesh, another Ashtaang mentor. R.D. Gupta ji, another Ashtaang mentor. Soni Chhapriya ji, Ashtaang mentor. We have a lot of mentors with us. Why? Because we want to support each and every participant. No, even a single participant should not feel that nobody is talking to them, they are not being taken care of. So you can just relax and just start with the program or continue with the program if you already enrolled. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge. She is the person that you'll be talking to the most before starting your classes. Okay, Anil Chauhan, that's me. I'll be answering most of your questions inside the WhatsApp group, because Swamiji will be coming live shortly to answer all your questions. But due to shortage of time, we may not be able to answer all questions, but you need not worry. You can put your question in the WhatsApp group. We'll answer all those questions. I'll be awake till 11 p.m. tonight. So I'll answer each and every question by 11 and won't sleep till before that. Okay, I promised. Himanshu Reddy, he's the technical person. He takes care of all the login IDs, password, the video uploads, the written instruction upload, everything. If your app is not working, we have an app also which you will be downloading to watch your classes. So if something is wrong with that, Himanshu is the person that you'll be getting help from. And then we have Anita ji. She'll be the person who you'll be talking to her, because she'll be calling each and every participant one by one. See, a lot of people are shy and do not ask in the group, in the class group. So
Anita ji will call those people. In fact, everyone. One day she'll be calling about 20 to 30 people, and that's the work that she'll be doing. So you can discuss your personal problems with her also. So if you look at all the way I explained whole the program, we have a proper team to take care of every participants. You need not worry. You need not be scared that what will happen. We understand that that this is a we understand that this is an online program. So we do not know. We think that how this program will happen. ये कैसे मैं कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? तो प्रॉपर टीम है. तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप रिलैक्स हो जाएं एंड देन जो अभी क्वेश्चन पूछें, कोई भी डाउट है वो पूछें बिफोर एनरोलिंग. अभी स्वामी जी से पूछ सकते हैं. स्वामी जी अगर आपका क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं. So with this, I'll end my part of the presentation. Namaskar. Thank you so much, Anil ji, for sharing the program details. We will now be taking up the questions. Let me see if Swamiji has joined in. Yes, I have joined. Okay. Just put Swamiji on. He's on spotlight already. Okay. So we'll just take up the questions one by one. Okay, Pooja ma'am writes, can we reverse osteoporosis? See, osteoporosis doesn't need a reversal. Osteoporosis means that your body is not absorbing things properly. Osteoporosis का मतलब क्या होता है? आपकी हड्डियां जो है उसमें ब्रिटलनेस आ गया, इसमें डेंसिटी कम हो गई. आपका शरीर जो ऑस्टियोसाइट्स हैं या फिर ऑस्टियोब्लास्ट हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए, वो बना नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास वो सोख नहीं पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे चीजों. Now, one interesting thing that I want you to actually see, एक भी इंसान, not even a single person has been benefited by taking in calcium. कैल्शियम लेके किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगा. In fact, if you take calcium for a long period of time, the chances of breast cancer increases by 200%. So, अभी करना क्या है? So, I will always say this, whenever there is a problem, try to understand it in your own sense and language. आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा चीजों को ठीक से, एब्जॉर्प्शन वीक है. एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा. ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा. मगर एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे? Now the real question is, how do you increase absorption? So have you ever drank fruit juice or any cola through a straw? एक straw से पिया है आपने, कोई चीज खींचा है? पिया तो होगा ना पक्का, खींचा तो होगा ना. आपके खींचने की क्षमता कम हो गई है. Absorption means what? Absorption का मतलब क्या है? आप नहीं खींच पा रहे, आपका शरीर नहीं खींच पा रहा. ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, आप ही है. खींचने के लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए क्या चाहिए? तो एक काम करें, कभी कभी मियां बीबी थोड़ा खेल लिया करो ना गेम. एक रस्सी ले लो और खींचो एक दूसरे को. देखिए आप जब खींचने का जोर लगाते हैं, व्हेन यू पुल, व्हाट डू यू डू विद इन योरसेल्फ? अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं खींचने के लिए. क्या आप सांस रोकते हैं खींचने के लिए? डू यू होल्ड योर ब्रेथ टू पुल थिंग्स मोर? ट्राई करके देखो, नहीं तो हाथ को ऐसे फंसा लो और ऑपोजिट पुल करो. ऑपोजिट पुल कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, कम से कम पता चलेगा आपको. खींचिए जरा,
क्या आप सांस रोकते हैं जोर लगाने के लिए, खींचने के लिए? रोकते हैं ना? तो क्या क्षमता कमजोर हो गई आपके शरीर के अंदर? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, एब्जॉर्प्शन तभी कम हो गया। कुंभक कमजोर हो गया तो एब्जॉर्प्शन कमजोर हो गया। तो कुंभक कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, वो तो आप कितने भी बड़े बड़े वर्ड बोलते जाइए, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होता। नामकरण संस्कार तो हम भी कर लेंगे साहब, ऐसे ऐसे नाम रख लेंगे। हाँ, संस्कृत में नाम रख लो, या ऐसे संथाली में नाम रख लो, कभी कोई बोल ही नहीं पाएगा। इससे इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, टंग ट्विस्टर से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। तो आपको जो शब्द बताए जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मालूम है कि ये क्या है। आपको जरूर मालूम है, आप जरूर इंटेलिजेंट है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बड़ी आसानी से ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट। Okay, Pramod sir talks about spinal cord L4, L5 gap, troubles in walking, I think, due to which I cannot stand for long time. वो ठीक है, ठीक है, these are observations. Now what is the problem? Spinal gap. आप सवाल क्या पूछना चाहिए ये भी तो समझिए. What should you ask? Why gap is happening today more? 100 years back there was no gap happening. आज ही गैप क्यों हो रहा है? 100 साल पहले तो नहीं होता था. So physical strength has drastically reduced in the last 50 years. 50 सालों में 80% तक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो चुकी है. न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हर एक को, जवान को भी है. आप सोच रहे हैं उम्र के साथ आ रहा है? नहीं नहीं, सभी को हो रहा है. So why there is gap happening? गैप क्यों हो रहा है ना? तो ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलता. एमआरआई करा लो, गैप दिख जाएगा, मगर एमआरआई करा के ठीक थोड़ी हो जाएंगे. कोई कैट स्कैन, रैट स्कैन करवा लो, उससे आपको दिख जाएगा कि ये गैप आ गया जी, यहां पे गैप आ गया, मगर उससे ठीक थोड़ी होता है. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइट क्वेश्चन? व्हाई गैप इज हैपनिंग? गैप क्यों हो रहा है? तो अब दो चीज बताऊं आपको, बहुत आसानी से समझिए. दो चीज, जस्ट टू थिंग्स. फर्स्ट, हर चीज शरीर के अंदर रीजनरेट होती है, हर चीज बनती है. कुछ खत्म होती है, डीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन भी होता है. ठीक है ना? ये दोनों ही चीजें होती है. अगर डीजनरेशन ज्यादा हो या आप उसे हटा दीजिए वो ज्यादा हो, रीजनरेशन कम हो तो वैसे ही डीजनरेशन ज्यादा होगा. तो रीजनरेशन की स्ट्रेंथ, दोबारा बनने की कैपेसिटी जो आपके शरीर की, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए, ठीक है, तो गैप आ जाएगा. पहली बात. दूसरा रीजन गैप आने का क्या हो सकता है? अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो गैप आ जाएगा. आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो एक तरफ उठ जाएगा, एक तरफ दब जाएगा. फिर कहेंगे कि जी नस दब रही है कहीं ना कहीं, अरे मेरे तो हाथ में सेंसेशन थोड़ा अजीब से हो रहे हैं. तो अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो भी एक तरफ में गैप दिखाई देगा. अच्छा, इसको और आसानी से समझाने के लिए बोलता हूं, और आसानी से समझाने के लिए, चपटे पत्थर होते हैं ना, पत्थर, चपटे पत्थर, ऐसा ले लीजिए 33 उनके बीच में ड्रिल करके होल कर लो और बीच में रस्सी डाल लो. रस्सी को आप खींचेंगे तो सारे पत्थर अलाइन हो जाएंगे, रस्सी को आप ढीला करेंगे तो सब इधर उधर खिसकेंगे. हाँ या ना? तो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को कौन सी शक्ति, कौन सी स्ट्रेंथ बना के रखती है? अब जरा इसको सोचें. अब मैं एक नाम लूंगा आपके सामने, इसे कहते हैं व्यान पक्ष. एक पार्ट है उसका व्यान शक्ति, या फिर उसको व्यान वायु भी बोलो, है ना? तो व्यान वायु या इंटीग्रेटिव, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटिव फोर्स, अंग्रेजी में बना दिया, एक नया नाम रख दिया. आपके स्ट्रक्चर को जो सही सुदृढ़ रखता है, ऐसा जोर, ऐसा बल आपका शरीर का, वो कमजोर हो जाए तो आपको स्लिप डिस्क आएगा, गैप्स आएंगे जॉइंट में. इसी को व्यान पक्ष कमजोर होना कहते हैं. अब पहला पार्ट, रीजनरेशन कैसा बढ़ता है? रीजनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं आप?
रीजनरेट करने के लिए, यानी दोबारा बनने के लिए आपके शरीर में चीजें ठीक से जानी चाहिए। आपके शरीर में हर जगह न्यूट्रिशन यानी भोजन पहुंचना चाहिए, तभी वो बन पाएगा। आज के वक्त में मुझे दो चीजें बताइए, डायबिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, हर घर में डायबिटीज है ना। अच्छा, थायराइड इश्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वो भी हर घर में आ ही रहा है फीमेल्स में। ये दोनों इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, अगर ये अंग्रेजी का शब्द है मगर उसको आसानी से समझना है तो क्या, कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन जो पहुंचाना चाहिए आपके अलग अलग जगह पे, वो नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक से पैदा ही नहीं हो पा रहा। यानी कि आपके लिवर में जो प्रोसेस होना चाहिए आपके भोजन का, वो नहीं हो पा रहा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्यों नहीं हो पा रहा? इसके पीछे कारण है, पहली चीज, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेते हैं जो आपके शरीर के लिए नहीं बना हुआ। आपका शरीर डिजाइन नहीं है उस जीएम क्रॉप के लिए, आप सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ले रहे हैं। दूसरी चीज, आप दवाइयां ले रहे हैं जिससे लिवर में जाके वो बॉम्बार्डमेंट का काम करता, लिवर को कमजोर कर रहा है। तो पहली स्टेप मेटाबॉलिज्म का वहां पे वीक हो गया। तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं। आपके शरीर में जब एक कच्चा माल पके माल में तैयार होता है ना, ये पका माल ठीक से तैयार नहीं होता, वेस्ट बहुत बन रहा है। वही वेस्ट ग्लूकोज आपके ब्लड में दिखाई देता है। नहीं तो डायबिटीज में बताइए, आपके शरीर में इतना ग्लूकोज है, आपको तो 40 फीट ऊपर कूदना चाहिए, पर बहुत वीक फील कर रहे हैं। ब्लड में इतना ग्लूकोज, इतना कमजोरी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो काम के लायक नहीं है चीज, और उसी को दवाई खा के आप अपने ऑर्गन में घुसा देते हैं, इधर उधर छुपा देते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड वाला केस आप देखिए, थायराइड के केस में क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसे कहते हैं प्रोटीन, वो बन ही नहीं रहा शरीर में ठीक से, आपका शरीर नहीं बना पा रहा। वो भी एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म से दो चीजें पैदा होती है, एक ऊर्जा एनर्जी, और दूसरा प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये दोनों ही नहीं पैदा हो पा रहे तो आपके ऑर्गन्स को मिलेंगे क्या? आपका रीजनरेशन कमजोर नहीं होगा क्या? और भी आसान तरीके से बताऊं, क्या आप पूरी सांस ले रहे हैं? आप जितनी सांस लेंगे आपका शरीर भी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, चीजों को ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर। जब धुआं होता है कहीं पे, गाड़ी, एक ट्रक है, बहुत काला धुआं छोड़ रहा है, आप वहां से गुजरते हैं, नाक बंद कर लेते हैं ना, या फिर आपका शरीर सांस नहीं लेता। तो मुझे एक बात बताइए, आपका वातावरण, चाहे आप कहीं भी रहते हो, क्या वो पोल्यूटेड नहीं है? बस ट्रक की तरह धुआं नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो मगर आपके शरीर को, आपका शरीर तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो तो कम सांस ले ही रहा है ना, एब्जॉर्प्शन कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, और फिर रीजनरेशन नहीं होगा। तो आपके शरीर में कोई चीज आगे नहीं जा पा रही, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। सब मान लीजिए कि पाइप में, जो जूस का पाइप है उसमें थोड़ा सा गूदा फंस गया, ठीक है ना, उसमें पल्प फंस गया। आप क्या करते हैं? थोड़ा जोर लगाते हैं ना, फिर क्लीन हो जाता है, चीजें आ जाती हैं, क्लियर हो जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है। तो अंदर शरीर में थोड़ा जोर लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, हाँ, आपके अलग अलग जगह पर चीजें पहुंचेंगी, रीजनरेशन होगा। व्यान फैक्टर को अगर इंप्रूव करेंगे तो आपके शरीर की सुदृढ़ता उसको इंटैक्ट करके रखेगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इलाज है इसका, बता रहा हूं मैं, टेम्पररी मैनेजमेंट नहीं बता रहा मैं। ऑपरेट करके कोई चीज कहीं पे कुछ डाल दो, वो टेम्पररी मैनेजमेंट है। एक जगह ऑपरेशन कराएंगे, दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी, आएगी कि नहीं? आप कह रहे हैं भैया ये जो यहां पे गैप आया, तो क्या दूसरी जगह गैप नहीं आएगा? तो आप गैप को सर्जिकली भी अगर करेक्ट कर देते हैं एक जगह पे, पर आपने इलाज तो किया ही नहीं अपना, यानी आपने वो मेटाबॉलिज्म या रीजनरेशन तो बढ़ाया ही नहीं अपने शरीर का। आपने जो आपके शरीर का अलाइनमेंट है वो तो किया ही नहीं। आप गाड़ी का तो अलाइनमेंट करवा लेते हो, अपने शरीर का तो करवाते नहीं।
गाड़ी गड्ढे में जाती है, उबड़ खाबड़ जगह में जाती है, अब जाके अलाइनमेंट करवा देते हो उसका, मगर इसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि इसका भी अलाइनमेंट करवाना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो आपको शरीर को इस्तेमाल करने में तकलीफ आने लग जाएगी। वो तकलीफ कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। आप जितने मर्जी एक्सरे स्कैन करवा लीजिए, ये इलाज नहीं है। पहली बात, रीजनरेशन का कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई रीजनरेट नहीं करती। आप जितनी दवाई खाएंगे उतना ही आपका शरीर डीजनरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रीजनरेशन और डीजनरेशन का इंबैलेंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप देखेंगे डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो ऑटो इम्यून है, कैंसर तक 12% के रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे। अपना इलाज जरूर कीजिए, टेम्पररी मैनेजमेंट, बहुत दर्द हो, ऐसी कोई बहुत जरूरत हो तो उस समय किया जा सकता है, मगर इलाज करेंगे तभी आपकी लाइफ सुधरेगी, वरना ये बिगड़ने आगे खराब से खराब होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। ये आप अपनी थोड़ा समझ में लेके आइए इस चीज को। गिव योर सेल्फ सम टाइम टू एक्चुअली अलाइन द बॉडी, टू डू समथिंग टू एनहांस स्ट्रेंथ ऑफ various strength factors of this body. Only then your life will improve. Next question. Anushka ma'am writes that vitamin D deficiency and complete left portion of body paining, head to heel. First of all, vitamin D deficiency or any kind of deficiency, I talked about it. Calcium deficiency, जो पहले osteoporosis की बात कर रहे थे, absorption factor. Vitamin D deficiency आपकी दादी को क्यों नहीं होता था, ये बता दीजिए, या नानी को, या आपके पूर्वजों को क्यों नहीं होता था विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी? और आप तो अच्छा भोजन कर रहे हैं, what the kind of food that you are consuming is drastically so different from what your ancestors were consuming. उनको तो मिलता नहीं था भोजन, जब जिस फसल जो मौसम में हुआ वही खाना पड़ता था उनको। आज आप दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं घर में बैठे बैठे, आपको ही डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है, आपके पूर्वजों को डेफिशिएंसी क्यों नहीं हो रहा था? ये सवाल सोचने लायक है कि नहीं है? तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर कमजोर हो गया। आपके शरीर का अंदरूनी स्ट्रेंथ, 6 बल होते हैं आपके शरीर में, देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 बल होते हैं। अगर ये वीक हो जाएंगे तो आप कुछ भी खा लीजिए दुनिया में, कैसा भी चीज खा लीजिए, आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी हो। आज तो आप मल्टीविटामिन भी खाते हैं, मगर प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही। तो एब्जॉर्प्शन समझिए, आप एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं करेंगे तो ये डेफिशिएंसी रहेगा। दूसरा फैक्टर, आप जो जितना भी भोजन कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो आपका शरीर ठीक से एब्जॉर्ब वैसे भी नहीं करता। तो ऐसे में अगर आपकी शक्ति ठीक रहेगी शरीर की, तभी एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि पेन हो रहा है ब्लड में। अब पेन किस वजह से हो सकता है? सबसे पहला रीजन पेन होने का, इन्फ्लेमेशन। ये वर्ड है ना, इन्फ्लेमेशन। ये होता क्या है इन्फ्लेमेशन? तो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, नाखून है अगर आपके, आप अपने हाथ पे ऐसे खरोंच मार दीजिए, जलन होगी, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो दर्द आपके शरीर में, इन्फ्लेमेशन पहला रीजन है, इन्फ्लेमेशन से होता है। तो क्या लगाएंगे कि वो दर्द कम हो जाए, जलन कम हो जाए? तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जलन कम हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाएगा। तो जब आप एक गोली खाते हैं दर्द की, या अपनी बीमारी की, एक डायबिटीज की एक गोली खाते हैं, तो केमिकल है ना, आप केमिकल भी अपने स्किन पे डाल लीजिए तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जलन हो जाएगी। पर वो अपने शरीर में डाल रहे हैं तो लिवर को इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या? लिवर को इन्फ्लेमेशन होगा तो वो थोड़ा घी लगाएगा, फैट क्रिएट करेगा, आप उसे क्या कहते हैं? फैटी लिवर। यही कहते हो ना? अरे वो तो बचा रहा है अपने आप को। आप सोचे नहीं, वो बचाने नहीं देंगे हम उसको किसी तरीके से।
अब बचाने नहीं दोगे तो फिर लिवर सिरोसिस होगा कि नहीं होगा, हेपेटाइटिस होगा कि नहीं होगा, लिवर खराब होगा, लिवर का कैंसर हो जाएगा। तो आप जब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए गोली खाते हैं तो आप कैंसर कर रहे हैं क्रिएट। 100 साल पहले किसको कैंसर था? आज ही तो कैंसर हो रहा है, हर घर में कैंसर निकल रहा है धीरे धीरे करके। तो इन्फ्लेमेशन लिवर को क्रिएट में डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए आपका शरीर क्या बनाता है, क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल बनेगा इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। आपके शरीर में जलन कम करने के लिए आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, मगर आप कोलेस्ट्रॉल भी कम करने लग जाते हैं। आप इसको जीने नहीं दे रहे। ये कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है। आप एक पैरासिटामोल खाते हो, डोलो खाते हो और फीवर कम कर देते। अरे साहब, आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि ये जो भी करे उसको खत्म कर दो। आप जरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको हिलने भी ना दिया जाए, क्या हालत होगी आपकी? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गिव अप और नॉट, यू विल गिव अप, योर बॉडी इज गिविंग अप, क्योंकि उसको ठीक ही नहीं होने दे रहे आप। लाखों सालों से इस मानव शरीर ने कोई बीमारी नहीं पैदा की। पिछले 100 साल में इतनी बीमारियां हो गई हैं और इसे हम एडवांसमेंट कहते हैं। आप इसी को एडवांस कहते हैं ना, कि हर एक को बीमारी होनी चाहिए, हर एक को दवाई खाना चाहिए, ये एडवांस कहते हैं आप अपने। तो आपको कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा, जब आपके बच्चे ही बीमार पैदा होने लग जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, हाँ, कभी तो आंखें खोलेंगे ना आप। आजकल कितने केसेस हो गए हैं, बेबी जो है गर्भ में बड़ा ही नहीं हो पा रहा, प्रीमेच्योर अबॉर्शन, अबॉर्ट हो जा रहा है बेबी। तो कभी ना कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी खोल लीजिए उतना बचे रहेंगे आप। नहीं तो देखिए, आप दवाई से तो बचने नहीं वाले, आप भोजन से तो बचने नहीं वाले, आपका एनवायरनमेंट तो खराब है, रिस्क फैक्टर तो इतने सारे हो गए। इस वक्त आपको कौन बचा सकता है? एक ही इंसान बचा सकता है, एक ही चीज बचा सकती है, वो आपका शरीर है। तो आप शरीर की शक्तियां अगर बढ़ा दें कि वो झेलने लायक बन जाए, तभी आप बचेंगे। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन तो कम करना पड़ेगा, इसके बगैर तो दर्द जाएगा नहीं। अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं कुछ समय के लिए चला जाएगा, मगर उसने फिर और दबा दिया आपके शरीर को, और खराब कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव करना पड़ेगा, लिवर को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने शरीर की रेजिलियंस स्ट्रेंथ, झेलने की क्षमता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बच पाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। जितनी गोलियां खा लेंगे उतना क्रैश होगा। आप देखेंगे आगे 5 से 10 सालों के अंदर जवान जवान लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। आज भी मर रहे हैं ना, 35 साल 40 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं हार्ट अटैक आ गया। स्पोर्ट्स के लोग कह रहे हैं कि अरे वाह, क्या खाना मिलता है इनको, क्या इनका शरीर है, मस्त, बहुत फिट है और खूब एक्सरसाइज करते हैं, और पता चला हार्ट अटैक होकर खत्म बंदा। अगर आपको थोड़ा काम भी ज्यादा करना है, एक्सरसाइज भी करना है, तो हार्ट तो होना चाहिए स्ट्रांग, लिवर तो स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी तो स्ट्रांग होना चाहिए। आप बताइए कितने डायलिसिस के केस बढ़ रहे हैं, किडनी कितने लोगों की खराब हो रही है। तो अगर आप दवाई खा के अपने डिजीज को मैनेज ही करते रहेंगे तो आपका शरीर गिव अप कर देगा किसी दिन, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल ऐसे भी केसेस हो रहे हैं जहां रात में बंदा सोया, सुबह नहीं उठा, 32 साल 33 साल 34 साल के लोग, क्योंकि आप इस शरीर को जीने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमारा शरीर बड़ा इंटेलिजेंट एंटिटी है, इसको मालूम है कैसे बचाना है, इसीलिए लाखों सालों कभी बीमार नहीं हुआ ये शरीर। पिछले 50 सालों में इतनी बीमारियां आ गई हैं। तो अगर आप इस शरीर की ये षड बल स्थापना कहेंगे, 6 बलों को स्थापित करेंगे, अष्ट शरीर 8 लेवल पे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, तो आप इंश्योर कर सकते हैं, आप पक्का कर सकते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएगी, आप बचे रहेंगे। वरना हमने कुछ नहीं छोड़ा कि हम हेल्दी रह सकें। इसी को कहते हैं वेस्टर्न साइंस, इट्स अ किलिंग मशीन। आपको सभी को यह बात समझ में आनी ही है, थोड़ा जल्दी थोड़ा देर से, मगर कितना टाइम है किसके पास, हमें मालूम है।
Okay, Swati ma'am says, can we cure skin problem psoriasis through Ashtaang Chikitsa? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो काफी समय से होती है, फिर वो जाके इरप्ट होती है, दिखाई देने लग जाती है। तो स्किन की प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती। आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है काफी लंबे समय तक, और फिर जाके आपको ये स्किन पे इसका असर दिखाई देगा। तो जो रूट है, जो जड़ है, उसको हम फिनिश कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किन में प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं देगी आपको। ये किया जा सकता है, मगर वो आपको कॉस्मेटिक चेंज जो चाहिए वो लंबा समय लगता है। जो स्किन का कॉस्मेटिक चेंज चाहिए ना आपको, क्योंकि एक बार वो मैनिफेस्ट हो गया आपके शरीर के रूप में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको जाने में समय लगता है। लेकिन बीमारी हम खत्म कर सकते हैं 100%, और वो भी बहुत जल्दी। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, सोरियासिस जो रूट कॉज है उसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्किन पे उसको आपको चेंज देखने में आपको प्रॉब्लम चली जाएगी, आपके सिम्टम चले जाएंगे। जो तकलीफ आ रही है स्किन पे वो चली जाएगी, जो आपके शरीर के अंदर आ रही है तकलीफ वो चली जाएगी, मगर स्किन में कॉस्मेटिक चेंज देखने में थोड़ा लंबा समय लगता। तो ये मान के चलिए कि 1 साल के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मगर शायद 3 साल से 5 साल लग जाए आपके कॉस्मेटिक चेंज देखने में। पर क्या ये डील खराब है? तो मुझे बता दीजिए ऑप्शन क्या है आपके पास में। स्टीरॉइड अगर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज होगा, और आगे चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। आज शुरुआत से ही बोल रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि भाई कैंसर तो कभी भी आ जाएगा। तो बताइए डील है कोई? इसके अलावा कोई डील है आपके पास में? हाँ, और भी चीजें, सपोर्ट ले सकते हैं कुछ बाहर से। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि कभी कभी गलती से किसी आयुर्वेदाचार्य के पास भी चले जाइए, किसी नाड़ी वैद्य के पास चले जाइए, किसी रस शास्त्री के पास में चले जाइए, क्योंकि बाहर से आप जो भी लेते हैं वो सपोर्ट होता है। केमिकल सपोर्ट से तो अच्छा नेचुरल सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट ले लीजिए। बट एक बात, क्योर आपका शरीर ही करता है, आपको ठीक आपका शरीर ही करेगा, उसकी तरफ में काम करने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कुंभक कंपलसरी है, बाकी सब चीजें जो बेस्ट पॉसिबल है वो कीजिए। भोजन अच्छा कीजिए, ऑर्गेनिक की तरफ में जाइए, वो सब ठीक है, वो सब सपोर्ट है, मगर ठीक तो आपका शरीर ही करेगा। और आपका शरीर एक लिमिट से ज्यादा है, अगर बिगड़ चुका है तो उसको ठीक करने की हमें बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। तो आपके शरीर को सपोर्ट करने की जरूरत है, वो कुंभक के जरिए होगा। बाकी नेचुरल सपोर्ट और बाकी चीजें ठीक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग जिनको हम कहते हैं नहीं ठीक होगा, एलोपैथी कहती है, आराम से ठीक होते हैं, बहुत आसानी से ठीक। हमारे पास बहुत प्रूफ है साहब, हमारे पास बहुत प्रूफ है। Okay, Sangeeta ma'am writes, I feel stiffness in whole body and neck, lumbar and cervical spondylosis. अब इसी पॉइंट से पकड़ के मैं आपको समझाता हूं कि स्टिफनेस क्यों होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टिफनेस है, मुझे यहां पे स्टिफनेस, एक एरिया बताया कि शरीर के ऊपर के हिस्से में, सर्वाइकल रीजन में या रीढ़ के ऊपर के हिस्से में मुझे स्टिफनेस है। स्टिफनेस कब होती है? अच्छा, एक चीज आप अपने शरीर में देखेंगे कि गर्मी में आपको ज्यादा स्टिफनेस होती है या सर्दी में, ठंड के टाइम पे ज्यादा स्टिफनेस होती है? आप ऑब्जर्व करेंगे अपने शरीर में, जब ठंड के टाइम होगा ना उस समय ज्यादा स्टिफनेस। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व की, आपका शरीर अगर ठंडा हो जाए तो स्टिफनेस बढ़ जाती है। ठीक है, ठंडा कैसे होगा? तो आपके शरीर में कफ अगर बढ़ जाए, कफ वात अगर बढ़ जाए, आयुर्वेद इस तरीके से देखता, तो आपके शरीर में स्टिफनेस आने लग जाएगी। और कफ वात, कफ का एरिया क्या है? गले से ऊपर, या कह लो कि गर्दन और गर्दन से ऊपर। ठीक है, आपके छाती से नीचे कमर तक पित्त का एरिया है, कमर से नीचे वात का एरिया। ऐसा सिंपल समझिए, ये पूरा ज्ञान नहीं है, मगर आसानी से समझने के लिए। तो अगर आपके शरीर में कफ दोष जल्दी बढ़ जाता है तो आपको सर्वाइकल,
ऊपर की तरफ में होगा प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका शरीर ठंडा हो रहा है। आप पकड़िए इसको, ठंडा क्यों हो रहा है? तो एक जवान इंसान को टच करके देखो और एक बूढ़े इंसान को टच करके देखो, क्या फर्क महसूस होगा? एक जवान इंसान गर्म है, उसका शरीर गर्म होता है, द बॉडी इज वार्म, गर्म खून कहते हैं ना, और एक बूढ़ा इंसान ठंडा होता है। तो क्यों ये टेम्परेचर क्यों कम हो गया उम्र के साथ में? क्योंकि आपकी जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो गया, मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। अब एक एक्सपेरिमेंट करें, अगर इसको बढ़ा दें तो एकदम से आप देखेंगे स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। सिंपल सिंपल बता रहा हूं, सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। ऐसा कीजिए, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आप बैठिए आराम से और सांस रोकिए थोड़ी देर तक, जितना आप आराम से रोक सकते। ऐसा करते जाइए 10 मिनट। 10 मिनट बाद कुछ लोग देखेंगे पसीना आ गया, शरीर नहीं हिलाया, पसीना वैसे ही आ गया। और उसके बाद अगर आप अपनी गर्दन को या कोई भी जॉइंट को हिलाएंगे, आप देखेंगे फ्लेक्सिबल हो गया। खास करके जो हठ योग करते हैं ना, मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर। हठ योग जो करते हैं ना, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनको मैंने कुंभक करा के हठ योग कराया और देखा कि कुंभक करने के बाद में वो हठ योग बड़ी आसानी से कर लेते, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन बता रहा हूं, लॉजिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं, बट लॉजिक पे दुनिया नहीं चलती। लॉजिक से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका एंड पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाएगा, यू विल कम टू अ वॉल। सो लाइफ को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो पैरेलल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हाँ, स्ट्रेट लाइन थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस के अलावा आपके जीवन में पैरेलल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तभी बाकी आयाम खुलते हैं। तो एक सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आपकी स्टिफनेस कैसे कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं इसमें, और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक हीट अगर कम है तो आपके बॉडी में रीजनरेशन कम होगा, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। सर्वाइकल रीजन में रीजनरेशन अगर कम दिखाई देगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। आपके बॉडी में हीट नहीं होगा तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, कफ का और दूसरी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लॉकेजेस होंगे। तो रिवर्स फ्लो होता है आपके शरीर में, एसिड, एसिड का रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा। जब सीधा फ्लो नहीं होगा न्यूट्रिशन का आपके शरीर में तो रिवर्स होता है, ऊर्ध्व गत वायु कहते हैं इसको, और उससे पार्किंसन, न्यूरो डिसऑर्डर, ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर, ये चीजें आएंगी। और ये चीजें आजकल बहुत बढ़ रही हैं, आप थोड़ा डेटा चेक कीजिए गूगल में जाके। तो Mridula कुंभक इस ma'am वक्त में says, जरूरी है। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। so sorry Swamiji, Mridula ma'am says, is there cure for epilepsy? सो एपिलेप्टिक फिट, पहले आपको समझना पड़ेगा कि एपिलेप्सी आती क्यों, होता क्यों, ठीक है ना, एपिलेप्सी होता क्यों। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि फीमेल को डिलीवरी के बाद में एपिलेप्टिक फिट ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो हुआ क्या, अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो क्या समझना है, कैसे समझेंगे इसको? मैं समझाने के लिए आपको घंटों तक बता सकता हूं, मगर ये तो कोई यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं, है ना। तो आपको बहुत बड़ी आसानी से समझ में आ जाए वो तरीका मैं बता रहा हूं। तो एपिलेप्टिक फिट कब आता है? एपिलेप्टिक अगर सिम्टम देखें उस समय जब फिट आ रहा है, उस इंसान को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और उस इंसान के हाथ को थोड़ा पकड़ के देखिए, तो पता चलेगा उसने पूरी बॉडी को ऐसे कस के टाइट पकड़ रखा है, ठीक है, उसके बॉडी टाइट हो जाता है और ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। टाइट होगा, बॉडी रिलैक्स करेगा, फिर टाइट होगा, रिलैक्स करेगा, इतना रिलैक्स करना चाहता है बॉडी कि उसको बेहोश कर देता है। आप अपने शरीर को टाइट करना शुरू कीजिए, आपका शरीर तो नुकसान नहीं झेलना चाहता ना, वो अपोजिट करेगा, आपको वो लूज करेगा।
लेकिन फिर से आप अगर टाइट कर रहे हैं तो फिर वो लूज करेगा और इतना लूज कर देगा कि आपके सेंस कम हो जाए, बेहोश कर देगा। ये काम आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आप नाक मुंह को बंद कर लीजिए, सांस ना ले, थोड़े टाइम बाद में आपको शरीर बेहोश कर देगा, मरने नहीं देगा कभी भी। हमारा शरीर कभी भी मरने नहीं देता, तो वो आपको बचाता है। पर आप क्या कर रहे हैं? आप टाइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा आप नहीं कर रहे, आपके शरीर में मूवमेंट रुकावट हो गई। जो इंटरनल मूवमेंट है, न्यूरो मूवमेंट है, फ्लो होता है ना हर चीज का आपके शरीर में, इसे वेग कहते हैं। वेग। आपके शरीर के फ्लो में आप जब भी रुकावट डालेंगे आपको बीमारी हो। तो जब भी आप एक एलोपैथिक दवाई खाते हैं, वो आपके शरीर के किसी एक साइकिल को, किसी एक फ्लो को काट देता है, रोक देता है। ठीक है? तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं आपके शरीर में, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूट हो गया, आपका घर का माहौल बहुत गड़बड़ है, जहां पे आप ईज में नहीं आ पा रहे, आसानी से नहीं रह पा रहे, आप शरीर के अंदर ऐसा भोजन डाल रहे हैं जो कि आपका शरीर डिजाइन नहीं है उसके लिए, ऐसी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, दवाई खा रहे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या क्रिएट करते हैं? ये किसी चीज को फ्लो नहीं होने देते ठीक से, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो अब मुझे आपको डेटा थोड़ा बता दूं, प्रूफ थोड़ा दे दूं। आप देखिए हार्ट ब्लॉकेजेस कितने बढ़ रहे हैं दुनिया में, ये कम हो रहे हैं। ठीक है? पेरिफेरल ब्लॉकेजेस, हिमोराज, यानी कि आपके किसी एक जगह ब्लड क्लॉट का होने की संभावना बढ़ रही है या कम हो रही है? खून के गाढ़ा होने की संभावना बढ़ रही है या कम हो रही है? ठीक है ना? पैरालिसिस अटैक होते हैं, पेरिफेरल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं कि कम हो रही? तो आपको पता चलेगा इस रेट से बढ़ रही है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आपके शरीर का वेग डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप जब भी अनवांटेड चीज इस शरीर के अंदर डालते हैं या इसको अलग माहौल में रखते हैं, तो इसका वेग को नुकसान होता है। इतना नुकसान हो सकता है कि आपका फंक्शन रुक जाए, आपकी कार्य प्रणाली रुक जाए। एक तरीका बताया, सिर्फ एक तरीका बताया एपिलेप्सी का, एक पर्सपेक्टिव बताया। अभी मैं 50 पर्सपेक्टिव बता सकता हूं एपिलेप्सी के, मगर 50 क्या 50,000 भी समझ लीजिए, इलाज नहीं होने वाला। क्या बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, सुनिए इस बात को ध्यान से। सारा गूगल दिमाग में उठा के भर लीजिए, तब भी आप हेल्दी नहीं होंगे। लिख के देता हूं, गारंटीड। क्या करके हेल्दी होंगे? अगर इस वेग को वापस स्थापित करें, अगर इस फ्लो को अपने अंदर, शरीर के फंक्शनल फ्लो, सेंसेशनल फ्लो, ब्लड फ्लो, हार्मोनल फ्लो, अगर फ्लो को वापस स्थापित करेंगे तो प्रॉब्लम घट जाएगी। ये आप इमीडिएटली देख लेंगे। रिवर्स होने में टाइम लग सकता है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाती है, कम हो जाती है, आपका जीवन सुंदर हो जाता है। तब आप इस पे अपने शरीर के ऊपर थोड़ा टाइम अगर कुछ लंबे समय तक देंगे तो बिल्कुल निकल जाएंगे। तो ये ठीक हो सकता है, मगर आपको अपने शरीर के ये बाकी फैक्टर्स, वेग को ठीक करना पड़ेगा। और वेग को ठीक करने का तरीका क्या है? कुंभक, जो आपके अंदरूनी वेग को ठीक कर सकता है। Okay, Ravi Babu sir, you can ask your question, please. Ravi Babu sir. Good evening, Swamiji. गुड इवनिंग जी। I'm a patient of hypothyroidism ओके and sleeplessness, and uric acid levels are normal. But when I take protein diet, I get pain in the left toe, and also See. I'm suffering
suffering from benign prostatic hyperplasia, grade 1. I get a painful urination. Okay. In the daytime, night no problem, only daytime. When I take more water, I get more urination, the painful urination. This is all Painful. because of hypothyroidism, it seems. I'm suffering from hypothyroidism for the last 30 years. I'm Okay. taking thyroxine. So how many years I should take? So I want to take advice from you. I want to stop this So, medicine. you So need to understand can it what, be reversed or not? yes, sir. You need to understand what is your problem first of all. You need to understand when you say hypothyroidism. So specifically in your case, what is the problem? Do you know you have protein allergy? Yeah. You have Proteins. protein allergy. And many people have this protein allergy. It has developed in the last 10 years just because everywhere high protein diet is promoted. Human beings are not built for high protein diet. They are not manufactured for high protein diet. That is why mother's milk has the least amount of protein in the whole animal kingdom. Any milk in the animal kingdom. Human milk, mother's milk has the least amount of protein. Why nature gave least amount of protein to mother's milk only? Because human beings need least amount of protein to be healthy. The body can manufacture every kind of protein. Now the second part, first of all, you are allergic to protein. Second factor, your body is not able to manufacture proper protein chain. The manufacturing of chain, protein chain, is weak. So metabolism gives two different products. As I said before, one is energy, glucose. The other one is protein stuff. Right? Two things your body, in a very simplistic manner, two things your body need, and your body manufactures them. Whatever protein you give to your body, it is not consumed by the body. Body will always break the protein into amino acids and rearrange according to its necessity. So if you provide more protein to the body, what will happen? Your body will spend more energy in breaking down, and that will create hypothalamic inflammation. There is a small brain behind, hind brain, where there lies a pituitary gland, which is a master gland, which releases TSH, thyroid stimulating hormone. The moment you have hypothalamic inflammation because of protein allergy, or if you are taking in more protein, TSH release. Swamiji, please unmute yourself. There are other things which are related to it. Now, thyroid, or the energy which controls thyroid, the energy which controls the functioning of thyroid, is responsible for rhythmic motion in your body. So any kind of motion, if it has to be flowing or rhythmic, then that energy has to be correct. So for people who are into thyroid problem, males will see also, if you observe, the hormone flow doesn't remain normal. Not only that, the absorption of material gets hampered. That is why the flow which gets hampered creates water retention, fat retention, gas retention. So females and males also will see their face becoming puffy in the morning. There is water retention happening somewhere in the body, or there is a lot of fat. It doesn't move, and it becomes very difficult to lose fat. Also, your urine
usually get absorbed from large intestine. The urine absorption happens from large intestine. Now, people into hypothyroid condition, the flow gets hampered and they face regular constipation, long-term chronic constipation. The chronic constipation will always impact the absorption from large intestine, and thereby, because the large intestine is almost in a state of block, there is micturition or urination calculi, difficulty or painful urination, right? So this is I almost connected everything. Sir, Anupama here. It is due to your hypothyroid. Now solution, just a minute. Solution तो आपको देखना पड़ेगा. You must revive the rhythm of functioning and flow in the body. So that is rhythm. Second thing, you must create balance in your body. And the third thing, you must create the strength of creating rhythm and balance. दोबारा से सुनिए. Listen to it again. Rhythm, balance and strength. So you must create the rhythmic flow. See, your ancestors, when they used to do lot of work, much more work, physical work than what you are doing, they would always sing in doing those work. Why? They don't want to lose their rhythm. So if you lose your rhythm, your body will not be able to manufacture proper protein. And this is the hypothyroidism, what we are talking about. So rhythm, balance and strength. In Hindi, we call it bhava, raga and tala. Bhava, raga and tala. Bha, ra, ta, Bharat. Your country's name depicts health. You need to just decode it. So what will create rhythm, balance and strength? Ashtaang Chikitsa is designed to do that, to create rhythm, balance and strength. But we have directed it towards neuro musculoskeletal problem. So if you just have hypothyroid issue, then you should actually think about joining the program which is designed for hypothyroidism. We have a different program. People have those problems, they can leave their number and put in the bracket hypothyroidism or some other problem. If you have neuro musculoskeletal issues, also thyroid, then I will say you can think about joining this program. Most of the problem will be addressed because customization is done in this program. Even after 6 months, if something is left, then we will suggest to you the right kind of program for whatever the problem which has remained. Sir, please मुझे बोलना है. अनुपमा. हाँ जी बोलिए. Excuse me, sir. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए. आजकल कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाओ और जो मार्केट में अवेलेबल है इजीली वो मत खाओ. देखिए ये ऑर्गेनिक जो है ना, देखिए पहले जो आप ना फिरंगी दिमाग को समझिए. ये जो फिरंगी दिमाग होता है ये कुछ भी ठीक नहीं रहने देता. ये फिरंगी प्रजाति मतलब मानवता की सभ्यता में सबसे बेवकूफ प्रजाति है. ये केवल नाम करते हैं, नाम रख लेते हैं चीजों का. तो ऑर्गेनिक मुझे बताइए, क्या 100 साल पहले जो चीज उगती थी क्या वो ऑर्गेनिक नहीं थी? नहीं, वो खाद तो हम लेके आए, खाद तो हम लेके आए ना, केमिकल तो हम लेके. तो ये तो पहले ही नेचुरल होता था, पहले ही ऑर्गेनिक था. जो अब हमने गड़बड़ी की है उसको तो हटाना पड़ेगा ना. तो हटा नहीं रहा ना कोई उसको. कौन हटाएगा ये बताइए ना, कौन हटाएगा? आता कौन है? आजकल एक दूसरा कौन है? हम लोग भोजन कर रहे हैं ना. भोजन तो हमारी हर एक इंसान की जरूरत है. अगर आप ऑर्गेनिक कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो लोग केमिकल वाली खेती क्यों करेंगे, आप बताइए. तो सर ऑर्गेनिक लेकिन महंगा होता है थोड़ा. तो सस्ता कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे. तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे.
नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत कर रहे हैं डिमांड, लेकिन अगर आप देखिए अपना पॉकेट भी आपको देखना पड़ेगा। कम से कम जिसे हम औषधि कहते हैं, औषधि किसे कहते हैं आपको नहीं दवाई। मालूम? आपको नहीं, दवाई को नहीं कहते औषधि, मसालों को कहते हैं औषधि। मसाला जो है वो अरबी वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है मसाला। आप भी अगर बंगाल की तरफ में जाएंगे ना, वो मसाले को वो आज भी औषध कहते हैं। तो आपके जो मसाले हैं वो औषधि हैं। औषधि का मतलब होता है जो पौधा एक बार फल दे के खत्म हो जाए वो औषधि है। तो आपके ये जितने मसाले जिनको आप कहते हैं ना, वो औषधि के पौधे हैं। कम से कम औषधि अपने घर में अगर आप ऑर्गेनिक ले आए, तो औषधि तो आप मेडिसिन बोल रहे हैं ना, और वो एक्चुअली मेडिसिन है। तो कम से कम मेडिसिनल काम तो करना शुरू कर देंगे आपके ऊपर, ये तो 100% गारंटीड है। तो आपके organic पूर्वजों खाने ने, हाँ, ऑर्गेनिक फूड खाने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक भोजन अगर आप लेने लग जाएं तो 60 to 70% आपकी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाए, भोजन को ठीक करने से ही सॉल्व हो जाए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, 60 to 70% प्रॉब्लम यहीं से ठीक हो जाएगी। मगर एक ऑप्शन जो आपके पास में अवेलेबल नहीं है आज के टाइम, वो ये है कि शरीर के बल और वेग कमजोर हो गए हैं। एक तो शरीर भी इसको बढ़ाएगा थोड़ा, मगर आपको इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हमारी ऐसी स्थिति आ गई है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कुंभक का ऑप्शन नहीं है। बाकी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके अपनाइए, और फिर आपको पता चलेगा हम किस गर्त में थे, किस गड्ढे में थे। सर मुझको एक मेजर प्रॉब्लम है कि मुझको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए? मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको भी समझ में आएगा। बाकी लोगों, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये। 10-12 सालों से मुझे है प्रॉब्लम, और कभी कभी तो हर 2 मिनट में जाना पड़ता है, हर 5 मिनट में जाना पड़ता है। हाँ हाँ, अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। आपका शरीर बार बार यूरिन पैदा कर रहा है, इसका मतलब कुछ वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? हाँ, आपका शरीर समझदार है, उसके अंदर कुछ गलत डाला आपने, या गलत उसमें पैदा हुआ तो वो फेंकेगा। फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? फेंकेगा ना। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, आप एक दवाई खाते हैं, उस दवाई का कितना परसेंट आपके शरीर में जाता है? 95% से ज्यादा शरीर बाहर फेंकता है। तो आप जब भी दवाई खाते हैं तो आपका शरीर इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, करेगा बाहर फेंकने की कोशिश। बाहर फेंकने की कोशिश में कैसे करेगा बताइए? उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास सबसे आसान ऑप्शन है कि वो ब्लड में जहां पे उसको वेस्ट प्रोडक्ट डालना है वो डाल देगा, और किडनी उसको फिल्टर करेगा। क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनिए। खून में डालेगा, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर फेंकेगा। तो आपको क्या मालूम है, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आपको प्यास ज्यादा लगती है। एक्चुअली आप कोई भी दवाई खाते हो तो प्यास ज्यादा लगती है। क्यों प्यास लगती है आपको? क्यों लगती है प्यास आपको? क्योंकि शरीर को कुछ फेंकना है, उसके लिए पानी चाहिए उसको, और वो प्यास क्रिएट करता है, उसको पानी में डिसॉल्व करता है, किडनी उसको फिल्टर करेगा और बाहर फेंकेगा। पहली चीज तो इसका मतलब, अगर आप ये क्लेंजिंग सिस्टम पे लोड डाले जाए, रोज खाए जाए दवाई कोई, तो किडनी पे असर आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों की किडनी खराब हो रही है? माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवा के देख लीजिए। आपको तो मालूम नहीं कि इस वक्त में 99% लोगों के किडनी के ऊपर लोड है। आपको मालूम आपके लिवर पे लोड है, मगर लिवर 95% से ज्यादा डैमेज नहीं होता तो इंडिकेट भी नहीं करेगा, टेस्ट में भी नहीं आएगा। अब कर लीजिए टेस्ट, एलएफटी करवा लो जी। ये गऊ है आपके शरीर का, 95% डैमेज नहीं होगा तब तक बताएगा नहीं, मगर डैमेज तो हो ही रहा, किडनी डैमेज हो रहा। तो कहने का मतलब सीधा, इतना आसान है समझना, इतना आसान है समझना। इसीलिए कहा, जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो तो जो उसमें मेटाबोलाइट्स यानी जो प्रोड्यूस होता है उसमें ज्यादातर वेस्ट होता है। वो वेस्ट तो शरीर फेंकेगा ना आपका। लोड कहां आएगा? लोड कहां आएगा? किडनी पे आएगा। अब बताइए, डायबिटीज लोगों की किडनी क्यों खराब हो रही है?
क्योंकि डायबिटीज लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जिसको टेस्ट करके कह रहे नहीं नहीं ये कम होना चाहिए, कम होना, अरे वेस्ट है, उसको कम करने की कोशिश, शुगर को ऐसे दबा के नहीं होता। कम से कम शुगर आपके शरीर के बाहर निकल जाएगा तो ऑर्गन डैमेज तो नहीं करेगा। आप एक मेटफॉर्मिन खाते हो, हाँ, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, ऐसे नाम तो इतने सारे केमिकल डाल दिए, सब पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है। आप वो खाते हैं, उस कचरे को कहां डाल रहे हैं? किडनी में डाल रहे हैं, लिवर में डाल रहे हैं, नर्वस सिस्टम में डाल रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी न्यूरोपैथी हो गया, किडनी खराब हो गई, तो दवाई खा के किडनी खराब हो गई तो किडनी खराब होगी। तभी मैं कह रहा हूं कि देखो, फिरंगी प्रजाति जो है ना, ये दुनिया को मार देगी। ये बाहर पाश्चात्य जगत में जो रिलीजन पैदा हुआ, उसने करोड़ों लोगों को मारा। अब जो ये वेस्टर्न साइंस है, ये अरबों लोगों को मारेगा। तो भारतीय बुद्धि खुलनी पड़ेगी, भारतीयों को अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी। हम तो उनके गुलाम समझते हैं अपने आप को, तो आपको अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हो। इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल, और आपने गद्दी किसी और को दे रखी है, तो वो तो आपको भी मारेगा, खुद को भी मारेगा, आपको भी मारेगा। आपको गद्दी वापस लेनी पड़ेगी, आपको अपनी समझ खोलनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव नहीं करोगे, आपको मालूम है आयुर्वेद में बूढ़े पुराने कहते थे हर चीज की बीमारी पेट से शुरू होती है। बुजुर्ग कहा करते थे ना, ये सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। अब बताइए क्या वो गलत कहते थे? वो बिल्कुल सही कहते थे। तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव गोलियों से आप नहीं कर सकते। अच्छा भोजन करें, वो सपोर्ट है। दवाइयां भी खाएं तो नेचुरल खाएं, वो भी सपोर्ट है। लेकिन इस शरीर को के बल को, इस शरीर की शक्तियों को, इसके फंक्शनल स्ट्रेंथ को, आपको ऑर्गन को मजबूत करना ही पड़ेगा, और वो कुंभक से होगा। सो इसी के साथ विल एंड दिस सेशन। आप लोगों का सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको अपने जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sir, I have one suggestion. हाँ जी, बोलिए। Sir, this whole program I was listening, and my mother really also wanted to join, but she couldn't understand English. So she lost interest. My suggestion is this, that for such people, this can be customized into the other language also, that is Hindi. There are many people who really want to join but are not able to understand the concept because of this. So it happens in Hindi and English both. Yeah, but problems why? were discussed in Hindi, but the actual what the program consists Webinar of. you are talking about. Webinar you are talking. Yeah. Yes, It yes. happened in both the language, but what we will also do in the near future, we'll put some subtitles. Like Yeah, if it is mostly in definitely, English, that then will we'll help. put subtitles, and we'll see to it that it happens in as soon as possible. Thanks for your suggestion. आपके suggestion के लिए thank you. And thank you so much enlightening us. Really, really, very, very, very. You are all. I am saying you are all intelligent people. आप लोग बहुत समझदार हैं. Problem सिर्फ यही है कि आपने कुछ और पढ़ लिख लिया. The education has not opened the mind. Education, in fact, has blocked the mind. That is why there is a research by the Harvard University, and it says 70. If you study for 25 years or so, 70% of your intelligence is lost irrevocably. That means you cannot get it back. But our Indian ways of going towards what we call as prajna or jnana is all about opening ourselves up, not limiting ourselves up with some information. So still there is intelligence which is left in Indian people, and they have to rise now. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much, Swamiji. And good night to all the participants. Whatever questions have not been answered, please write in the webinar group and it will be answered by Swamiji shortly. Stay well and
Happy Navratri and a happy weekend. Thank you so much.